Friends, welcome to this Saturday webinar, and from next week we have deferred it to Wednesday. So CPEC webinars will be happening on Wednesday. So 10th of December we will have a webinar. Those members who are Atulji, you can put on your video also, so that I'm having some problem in no issue. See, the whole purpose of these webinars which we are doing weekly is to make every member a thought leader. And what I mean by thought leader is that on their passion, on their subject of liking, they should be the global speaker, they should be the writer, they should use social media to spread their knowledge, and that is the best way to get success. And in the second session, Atulji will be talking to us on exponential growth of our practice. Practice should be done like a business. You know, the old concept that one client should tell us another client, that will always remain. So we have a very new topic today. Ayush will be taking this topic on subsidy schemes of the government, and he is from Jammu, and we are very lucky that Ashish Soni and Atul Puri sir both are with us. And if any assistance you need from committee, do write to us. Those who want to write a book for ICAI on any of their liking subject, Institute gives 500 rupees per page. So if one writes for 300 pages, it is 1,50,000. Apart from that, various learning. It's like, getting a passport for success. So Ayush, on your topic, you must write because it's a unique topic. So, yes, definitely, sir. And it is also booming means of practice for many of our practitioners, because yes, they're giving DPRs for registrations of units, for loans, and for other purposes. So it is a very booming source of practice. So I think you have encouraged me to do a write-up book. I'll definitely go forward in this direction. Thank you. Now I'll request Rakesh to carry on with today's webinar. Rakesh Seni is from Alwar. He is a moderator. And like this, we want moderator for every webinar. So each viewer who are today, they can communicate to their friends. They themselves should offer first to see the experience of moderating. Thank you. Over to you, Rakesh. Thank you, Aditya sir. Thank you to precise about the today's webinar, and also give informative about the various encouraging schemes of ICAI to write the books or papers, and how the members can incentivize by writing books and all. Now, good evening, everyone. I am CA Rakesh Seni, moderator of this webinar. We are delighted to welcome you all in the webinar being organized by CPE Committee of ICAI. It is my pleasure to be a moderator for this session on webinar on PMEGP and other government schemes for businesses, industrial policies, and how to design super successful practice. In a short while, we will start this webinar. I would like to apprise you about CPE Committee. The profession of chartered accountancy has always been recognized for the quality of education, training, and a strong grip over technical standards. With globalization and increasing business complexities, it is essential that chartered accountants equip themselves with the changing occurring and stand out to the expectations of the society. Our institute is constantly working and contributing to cater to the needs and requirement of our members, and has taken various initiatives
for them from time to time in this direction. With this view, the Continuing Professional Committee of ICAI has always been the foremost to provide opportunities to their members to boost their knowledge base. The program for the evening is as follows. We have two sessions of 1 hour each and topics are PMEGP and other government schemes for businesses, industrial policies. Topic 2. How to design super successful practice. Our eminent speaker will talk about above mentioned two emerging areas of professional interest. Now, I introduce our first energetic and young speaker, CA Ayush Sahaniji. He is by profession a chartered accountant and has also done various post-qualification courses and certifications from Institute of Chartered Accountant of India. He is a prolific speaker on following topics: internal audit, GST, J&K industrial policy, and tax litigation. He is a guest speaker at various platforms like trade bodies, CII, FICCI, government departments, etc. He is elected member in J&K branch of NIRC of ICI and is currently holding post of treasurer. Now I welcome CA Ayush Sahaniji for his deliberation. Welcome, Ayush sir. Thank you so much, Rakesh ji, for this very intriguing introduction. And thank you so much. Good evening, everyone. I'm CA Ayush Sahani. I am a practicing chartered accountant in Jammu. I'm also treasurer and executive committee member of J&K branch of NIRC of the ICAI. I would like to thank, first of all, Shri Rajkumar Adhukia ji, chairman of CP committee, and other honorable members of the committee for giving me this opportunity to speak on this webinar. As we know, today's topic of my session is PMEGP and other schemes for MSMEs. Along with the above mentioned topic, I would also like to include what all should be included in a perfect detailed project report, where all we lack, and what all we can do to overcome those shortcomings. It will be relevant for PMEGP cases as well as other provisional registration cases with DIC, KVIC, and for loan purposes as well. If time allows, I will also cover the new industrial policy of J&K for the financial year 2021 to 2030, which is a major game changer for industrialization in J&K. What are the benefits available under the central and state policy, and which are attracting big players like Cadila, Apollo hospitals, big pharma companies, FMCG manufacturers, and other industrialists in our state, erstwhile state, now UP. Firstly, I'll start with the PMEGP. I'll share my screen. So, first of all, I'll start with Prime Minister Employment Guarantee Program, which is one of the major schemes we are covering in this webinar. So, what are the benefits available under scheme, who are eligible, and what are the negative list and all? Firstly, we'll discuss the major background of this scheme. So, as it goes, Prime Minister Employment Guarantee Program. It is a credit-linked subsidy program introduced by Government of India in 2008. PMEGP is a merger of two schemes, majorly PM Rozgar Yojana and Rural Employment Generation Program. It focuses on generating self-employment opportunities through various micro-enterprise establishment in the non-farm sector by helping unemployed youth and traditional artisans. The Ministry of MSME administers the PMEGP. PMEGP is being implemented by KVIC at national level, and at state level it is being implemented by
KVIBs and DICs and banks. As we all being practitioners have come across PMEGP scheme, or they are beneficiaries in one way or the other. So majorly what happens is, in rural areas KVIB administers it, and in urban areas DIC handles it. So what is the eligibility to claim benefit under the scheme? The individual must be 18 years or above if you want to claim benefit under the scheme. And passing of 8th standard exams is required if you want to claim benefit for a project where the project cost is 50 lakhs, 5 lakh above in service sector and 10 lakh above in manufacturing sector. Institutions like society, which are registered under Societies Registration Acts, many societies, trusts, they can also claim benefit under this scheme. Production-based cooperative society, many agriculture cooperative societies, they can also be registered under this scheme. Self-help groups, charitable trust, or mostly other cooperative society, not agriculture because it is non-farm based. So many production-based cooperative society which are like doing weaving work of major artists, normal regular artisans which are a rural background, many have claimed, self-help groups have been registered under this scheme and they are claiming benefit. So what are the negative list of activities who can't avail benefits under PMEGP scheme and who can't register under the scheme? So businesses or industries connected with the processing, production or sale of meat or intoxicant items like pan, BD, cigarette, etc. They cannot claim subsidy and they can't register under the PMEGP scheme. Businesses or industries linked with sericulture, cultivation, floriculture and horticulture. Manufacture of containers of recycled plastics or polythene carry bags of less than 20 microns. Nowadays, government is very strict as far as plastic and all is concerned. Even in many new industrial policies, the 20 micron thing has been introduced, and whoever is manufacturing containers or any polythene carry bags below 20 microns, they are put in negative list in most of the schemes. Processing of pashmina wool and other products which involves hand spinning and hand weaving, which comes under the purview of Khadi certification rule. Rural transport except houseboat, shikara, tourist boats in case of Andaman and Nicobar and J&K, and auto rickshaw and cycle rickshaw. CNG auto rickshaw will be permitted in Andaman, Nicobar and northeastern region of the country with prior approval of Chief Secretary of that state on merit. So what subsidy will be given? In case of journal category, eligible subsidy is 25% of cost of project in rural areas and 15% of cost of project in urban areas. And in case of special category, which I'll be covering in further part of the webinar, what are the special category and who all are covered in special category. Eligible subsidy is 35% of cost of project in rural areas and 25% in urban areas. So the quantum of margin and quantum of benefits available. So in case of journal category, see, in case of any loan you take, we all know that we have to put some our own margin or our own margin money and own contribution towards it. So if you're from journal category, 10% own margin has to be put. However, if you're from special category, and who all are in special category, these are SC, ST, OBC, minorities, women, ex-servicemen, physically handicapped, Northeast region, hill and border areas. So if you are from there, 5% only own contribution has to be made. And rate of subsidy is in urban areas 15% for general category and for special category 25%. And in rural areas 25% in general category and 35% in special category.
So these are the guidelines for filing an online PMEGP application for an applicant, individual applicant who will be filing it. So I have taken screenshots of the portal. I'll be taking it further in the webinar. So it is a kind of form which we have to fill online. So what I am covering is end to end. So you either being a practitioner, you can make only DPR, or we can from DPR to end filing it on KVIC portal, KVIB. I'll be covering entire process. Okay. So this is a format of the form will be what the beneficiary will have to file for claiming the subsidy. Some important aspects of this PMEGP scheme are: assistance under PMEGP is available only to new units which are being established. It will not be available to old units or any kind of revamped units or something like that. There is no income ceiling for setting up of project. There is income ceiling, there is a ceiling for cost of project 10 lakh 25 lakh, but there is no income ceiling for setting up of project. अगर एक मतलब 10 लाख का प्रोजेक्ट आपने बनाया है, वो अगर 1.5 करोड़ या 2 करोड़ भी इनकम जनरेट कर लेता है, तो उससे आप कोई भी किसी भी तरीके से आप कोई नेगेटिव लिस्ट में नहीं जाते हो, या फिर आपके साथ उस बेसिस पे कोई आपको डिनाई नहीं कर सकता बेनिफिट अंडर दिस स्कीम. So there is no such scheme for income ceiling. Existing units or units that are already availing government subsidy, central or state, are ineligible. For example, कि अगर आप कोई सेंट्रल और स्टेट सब्सिडी, जैसे हमारे JNK में JNK REGP है, या कोई और सेंट्रल सब्सिडी या इंसेंटिव्स या कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का बेनिफिट आप ले रहे हैं, तो आप साइमल्टेनियसली PMEGP में बेनिफिट नहीं ले सकते हैं. Any industry, including the COI based projects, excluding those mentioned in the negative list, can take advantage under this scheme. Any industry literally, except जो negative list में covered थे वो नहीं ले सकते, बाकी सभी इसमें benefit ले सकते हैं. The per capita investment under this scheme should not exceed 1 lakh rupees in plain areas and 1.5 lakh in hilly areas. इसका क्या मतलब है कि अगर जैसे cost of project है 10 लाख रुपए, तो उसमें मतलब 10% should be employed. तो अगर 10 मतलब अगर पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट अगर 1 लाख से ज्यादा होता है ना, तो इसमें क्या कहते हैं, ये आप इसमें बेनिफिट नहीं ले सकते. तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब हम DPRs वगैरह सबमिट करते हैं तो ये भी काफी क्वेरी आती है कि आपका ये जो है ये एक्सीड नहीं होना चाहिए. तो इस चीज को भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए व्हेन टाइम ऑफ मेकिंग ये आपका DPR, कि what is the per capita investment you are showing in DPR and what the client is making. If ज्यादा है तो वो नहीं क्लेम कर सकता इसमें बेनिफिट. मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है? 10 लाख रुपीज इन सर्विस सेक्टर एंड 25 लाख इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो अकॉर्डिंगली इसका 25% या 35% या 15% जो भी है आपको उसका सब्सिडाइज अमाउंट मिलेगा. बट द मैक्सिमम जो सीलिंग इस पे लगाई गई है प्रोजेक्ट कॉस्ट की, वो 10 लाख रुपीज इन सर्विस सेक्टर है और 25 lakhs in manufacturing sector. So अब इसमें हम DPR वाले पार्ट पे आ जाते हैं. तो DPR वाला पार्ट इज आप मतलब आप समझिए, इट इज रेलेवेंट फॉर not only your PMEGP projects but also for your loan projects or any other provisional registration that your client has got to do in DIC or any other area where DPRs are required. So थोड़ी बहुत चेंजेस होती है, मोर ओवर क्या कहते हैं, मोर और लेस ये सेम ही रहता है. DPR मेजरली 2 पार्ट में होती है. आपका राइट अप ऑफ द प्रोजेक्ट, इट्स प्रोमोटर्स, लोकेशन, मार्केट पोटेंशियल, और हमारा CMA डेटा जो हो गया, CMA डेटा, रेशियोज, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट स्केड्यूल्स. जो भी ये ऊपर वाला पोर्शन हमारा यूजुअली राइट अप पोर्शन होता है और नीचे वाला हमारा यूजुअली फिगर्स होती हैं इसमें. सो कंटेंट्स क्या होते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज हाईलाइट ऑफ द प्रोजेक्ट. अगर जैसे काफी हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स अपील करते हैं ITAT में, CIT में, तो हम एक पेपर बुक बनाते हैं. तो पेपर बुक के सामने हम एक साइनॉप्सिस जैसा बना के रखते हैं, जिससे हमारे जो भी कमिश्नर हैं या जो भी मेंबर्स ऑफ ITAT है उनको एक ही में सारा समझ आता है. तो सिमिलरली हमारा DPR का भी होता है. तो DPR में क्या होता है,
1 और 2 पेजेस में हमें अपनी पूरी डीपीआर को समराइज करना होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कि जैसे आपका इवेल्युएटर को, जो भी डीपीआर का इवेल्युएट कर रहा है, आपका जीएम कर रहा है, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज कर रहा है, तो उसको एक ही में, ताकि सारा कुछ उसको समझ आ जाए, हाँ, उसको बार बार पेजेस पलटने ना पड़े, क्योंकि एक बार तो इवेल्युएट कर देगा, लेकिन काफी टाइम उसको अप्रूवल के लिए, कुछ चीजों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन बार बार रिक्वायर्ड होती है। तो वो आपको एक प्रॉपर साइनॉप्सिस या हाइलाइट्स में शुरू में ही उसको लगा देना है, ताकि उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली उसको इजीली अवेलेबल हो जाए। देन कम्स द इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोजेक्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, आपको उसमें डिटेल में उसमें बताना है कि मतलब क्या प्रोजेक्ट है, क्या मतलब व्हाट द प्रोमोटर्स इंटेंड टू डू, व्हाट ऑल दे विल बी डूइंग, उसमें क्या उनका विजन क्या है, वो पूरा इंट्रोडक्शन में आपने प्रॉपरली कवर करना है। तो एक इस चीज में मैं एक ऐड करना चाहूंगा, काफी लोगों का मतलब एक क्वेरी रहता है, मैं ऑलरेडी भी इस टॉपिक पे और इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस पे पीएमईजीपी पे वेबिनार्स लेते आया हूँ। तो इसमें क्या है, लोगों का बहुत ये क्वेरी रहता है कि क्लाइंट ने आके इन्फॉर्मेशन बोला कि इस प्रोजेक्ट में बना दो डीपीआर, और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो ऐसे नहीं चलता है। आपको क्या है, जितना भी आपका क्लाइंट का विजन है ना, वो सारा इनकॉर्पोरेट होना चाहिए आपकी डीपीआर में। तो उसमें उसके लिए आपको क्या प्रॉपर उसके साथ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, डिटेल में उसका विजन आप थोड़ा अब्जॉर्ब कीजिए कि क्या वो चाहता क्या है, कैसा उसका यूनिट होगा, उससे प्रॉपर कोटेशंस लीजिए। ये आपकी जितनी भी मशीनरी वो एम्प्लॉय उसमें लगाने वाला है, कौन कौन सी मशीनरी में कैसा रहेगा इसका, उसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी, किस कैपेसिटी पे यूटिलाइज होगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की मतलब किस उस पर कितनी सेल्स कैसी रहेंगी, और मशीनरी की आउटपुट और कैसे रहेगी, और उस पर इनपुट कैसे है। जब तक आप ये प्रॉपरली उसके साथ सेटिंग्स करके नहीं करेंगे ना, आपकी एक अच्छी इफेक्टिव डीपीआर नहीं बन सकती है। मतलब काफी लोग ये बोलते हैं कि क्लाइंट ने बोल दिया कि इस जैसे फ्लावर मिल पे बना दो या फिर राइस मिल पे बना दो, लेकिन एक उसको प्रॉपरली, क्योंकि हर एक मतलब 1 करोड़ से भी लग सकता है, 100 करोड़ से भी लग सकता है यूनिट, लेकिन वो किस टाइप का यूनिट किस स्केल पे लगाना चाहता है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रॉपर सेटिंग्स उसके साथ करोगे। तो दिस आई वांटेड टू ऐड फ्रॉम माय पार्ट। तो अब कंटेंट्स में वापस आते हैं कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्रोमोटर्स। वही आप जैसे प्रोजेक्ट के बारे में अगर लिख रहे हैं, आपको प्रोमोटर का प्रॉपर एक्सपीरियंस, ये प्रोमोटर का ऑलरेडी सिमिलर यूनिट में कोई एक्सपीरियंस है क्या, और उसने अगर सिमिलर यूनिट और बाकी यूनिट्स में क्या, बिजनेस में क्या एक्सपीरियंस है उसको, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या एड्रेसेस हैं उसके, डिटेल्स कोई एग्जिस्टिंग यूनिट की, जैसे कोई एग्जिस्टिंग यूनिट्स में उसने कोई क्या, उसकी टर्नओवर कितनी है और कितना उसका, जैसे उसके टर्नओवर, उसने क्या बेंचमार्क्स या सक्सेसेस अचीव किए हैं जो एग्जिस्टिंग यूनिट में। इससे ना काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी जो भी आपका इवेल्युएटर होता है आपकी डीपीआर का, चाहे वो लोन के लिए कोई आपका ब्रांच हेड या जो भी इवेल्युएट कर रहा होगा, या फिर आपका इसकी सब्सिडी के लिए। तो ईदर वेज एक प्रॉपर एक हिस्ट्री आपके प्रोमोटर की पुट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन whoever the evaluator is. So nature of business, what kind of business the unit will be venturing into. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या है कि आपको प्रॉपरली पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस समझाना है। फॉर एग्जांपल अगर राइस मिल है ना, तो राइस मिल में आप कहाँ से वो पूरा दाना आता है, पैडी आता है, उससे कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है, कैसे उसकी वॉशिंग से लेके सब कुछ एंड प्रोडक्ट जो भी आपकी फैक्ट्री में जहां तक होगा, चाहे वो पैकेजिंग तक हो, जहां तक हो, आपको पूरा उसमें एक्सप्लेन करना है। अब रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड के बारे में कि किस टाइप का रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है होगा आपके यूनिट में, उसकी प्रोक्योरमेंट कहाँ से होगी, क्या वो लोकली अवेलेबल है या आपको कहीं से इंपोर्ट करना पड़ेगा या किसी नेबरिंग स्टेट से मिल जाएगा। तो उस रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड के बारे में आपको प्रॉपर उसमें अपने डीपीआर में मेंशनिंग करनी है। मार्केट पोटेंशियल, चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजी ऑफ द प्रोजेक्ट, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारी डीपीआर में। इसमें क्या है, आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है कि इसका मार्केट पोटेंशियल कहाँ है, कहाँ पे इस जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसकी डिमांड है, इसकी मार्केट कितनी है, आपकी यूएसपीज क्या है, जिसके कारण फॉर एग्जांपल आपका कोई और सिमिलर काइंड ऑफ यूनिट है तो जहां से जिसको आप टोटली सारा परचेज कर सकते हो या उसको सारा सेल कर सकते हो, और अलग अलग चीजें आपकी यूएसपीज हो सकती हैं। तो उसको इसमें इनकॉर्पोरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको इसमें चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी क्या आ सकती है, क्योंकि
ये चीजें अगर प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेटेड होगी ना, तो जैसे आपके फॉर एग्जांपल लोन के लिए या फिर सब्सिडी के लिए उनको पहले से पता चल जाएगा कि इस नेचर ऑफ बिजनेस में ना ये चैलेंजेस होते हैं, तो कल को अगर कोई इशू आए या कुछ है तो वो ये ना बोल पाए कि आपने तो बताया नहीं कि इसमें ये भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या कुछ हो सकती हैं। तो एक टाइप का ना ये ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप अपना कोई भी न्यू यूनिट सेटअप कर रहे हो, ताकि कल को जैसे कोई जैसे नेचर ऑफ बिजनेस होते हैं जहां पे विच आर वेरी प्रोन टू मेनी टाइप्स ऑफ रिस्क, तो उसमें उन चैलेंजेस में आपको वो चीजें लिखना जरूरी है, ताकि कल को जैसे कोई अगर एनपीए ना हो जाए या कुछ हो जाए तो वो ये ना क्लेम कर पाए कि उनको ये चीजें इन्फॉर्म नहीं थी पहले। सो एंड देन कमिंग टू स्ट्रैटेजी ऑफ द प्रोजेक्ट, तो कैसे आपकी क्या यूएसपी रहेगी और क्या आपको पहले से, चाहे आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज है या कोई भी एडवांटेज है, और क्या जाए आपके पास ऑलरेडी सिमिलर एलाइड यूनिट आप रन कर रहे हो या आपके कोई रिलेटिव रन कर रहे हैं जहां से आपको मेजर ऑर्डर्स मिल जाएंगे। तो ये चीज आपको अपने स्ट्रैटेजी ऑफ प्रोजेक्ट में लिखना काफी सही रहेगा और काफी इंप्रेसिव रहेगा ये जो भी इवैल्यूएटर होगा उसके लिए। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, प्रोडक्शन एंड आउटपुट, आपकी जो जैसे मैंने बोला कि आप प्रॉपर ये जो आप डीपीआर बनाते हो ना, इसको इसके साथ कोटेशंस प्रॉपरली आप अटैच किया करें। उसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक यूनिट है तो उसमें कितनी कैपेसिटी पे वो ऑपरेट करेगा। शुरू में तो ऐसा तो है नहीं 100% कैपेसिटी पे वो ऑपरेट करेगा, तो आपको वो प्रॉपर प्रोविजनिंग भी करनी है कि 60 या 70% कैपेसिटी पे ये ऑपरेट करेगा और इतनी इसकी फुल कैपेसिटी पर अगर ऑपरेट करेगा तो इतना आउटपुट निकाल सकता है ये। लेकिन अगर 60% कैपेसिटी पे ऑपरेट करेगा तो अकॉर्डिंगली इसका, जैसे हम कॉस्टिंग में किया करते थे सीए फाइनल के टाइम पे, तो कितना उसका उतना कम वो कितने परसेंट पे ऑपरेट करेगा और कितनी कैपेसिटी उसकी निकलेगा। तो अकॉर्डिंगली ओवर द इयर्स उसकी कैपेसिटी अप टू 70, 80, 90% आप लेके जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जैसा प्रमोटर आपको बताता है कि किस तरीके से वो उसकी क्या विजन लेके चलता है। फिर दूसरा ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस, टोटल कॉस्ट क्या लगेगी प्रोजेक्ट को, इट विल बी, उसमें टोटल आ गई सारी आपकी इंक्लूडिंग बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वो जितनी भी कॉस्ट लगेंगी और उसको कैसे फाइनेंस करेगा वो, उसमें उसका खुद का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, उसका टर्म लोन कितना रहेगा और बाकी लोन्स जिस तरीके से वो लेता है, या वो कोई मतलब रिलेटिव से फाइनेंस कर रहा है, अनसिक्योर्ड लोन ले रहा है कुछ, तो उसमें आपका वो टोटल मीन्स ऑफ फाइनेंस में टोटल उसमें ब्रेकअप आ जाएगा किस तरीके से कितना कितना वो पोर्शन फाइनेंसिंग कैसे करेगा उसकी। इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, इसमें हम क्या बताएंगे कि जैसे अब उसने लोन तो ले लिया लेकिन कब से वो रीपेमेंट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि जैसे लोन लेगा उसके इमीडिएटली बाद तो वो स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा टाइम तो उसको मतलब 6 महीने साल उसको तो डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा यूनिट है उसको बिल्डिंग सेटअप करने में भी लग जाएगा। तो वही डिपेंडिंग कितना उसको मोरेटोरियम सेट चाहिए जब से वो उसकी रिपेमेंट स्टार्ट करता है। एस्टिमेटेड सेल्स एंड सेल्स यूनिट पर प्राइस, एस्टिमेटेड ये सेल्स का भी हमारा कैपेसिटी से काफी लिंक्ड है, क्योंकि जितनी कैपेसिटी होगी उस पे उसकी एस्टिमेटेड सेल्स क्या होगी और उसका सेल्स प्राइस पर यूनिट कितना होगा। रॉ मटेरियल डिस्क्रिप्शन विद द नेम ऑफ सप्लायर एंड एड्रेसेस, रॉ मटेरियल लिखेंगे और विद द नेम ऑफ कहाँ से कौन कौन सा रॉ मटेरियल कहाँ से वो प्रोक्योर करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्लियरली इसमें अपने डिस्क्रिप्शन में और रॉ मटेरियल वाले शेड्यूल में ये प्रॉपरली सारा इसका बाइफिकेशन देंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, जैसे कोई भी कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर बाइफिकेशन देना, इलेक्ट्रिसिटी और अदर यूटिलिटीज, वाटर। तो इलेक्ट्रिसिटी आपका यूनिट कितने घंटे चलेगा, आपकी जो एक मशीन है, जो मेजर मशीन्स है, वो एक तो आपकी नॉर्मल लाइटिंग का आ गया, आपका जनरेटर का इलेक्ट्रिसिटी आ गया, या फिर जनरेटर में पेट्रोल वगैरह, तो और वो भी एक यूटिलिटी है। तो और आपके जैसे यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी और आपका जो मशीनरी जो रन कर रही है, कितने घंटे मशीनरी चल रही है, उस पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, अकॉर्डिंगली उस पर केवीए निकाल के कि कितना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगेगा आपको पर डे, पर मंथ और एनुअली, तो ये हमें निकालना है। और इसी तरीके से अलग अलग यूटिलिटीज का भी, जैसे आपकी वाटर होगी, अदर सप्लाईज होगी, तो उसमें किस तरीके से इसका कॉस्टिंग रहेगी। नंबर ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, आपको कितनी मैन पावर चाहिए होगी, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, और उनकी क्या डेजिग्नेशन रहेगी, जैसे अकाउंटेंट हो गया, कोई फोरमैन चाहिए आपको, कोई नॉर्मल लेबर, अनस्किल्ड लेबर भी चाहिए, और उनकी वेजेस किस हिसाब से रहेंगी डिपेंडिंग अपॉन मार्केट रेट्स जो भी हैं। कॉम्प्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन,
डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली जिस टाइम पे आप खरीद रहे हैं मशीन, अकॉर्डिंगली जैसे हम नॉर्मली डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हैं। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, इसमें क्या है, हम जैसे ही प्रोजेक्शंस पे बनाते हैं यूजुअली उसी बेसिस पे हमें 5 साल 7 साल, जब तक बेस्ट रहता है कि जब तक आप अपना लोन कवर कर रहे हो ना ओवर द पीरियड, अगर 7 साल का है तो 7 साल के आगे प्रोजेक्शंस आप बनाइए, अकॉर्डिंगली दिखाइए। और फिर ब्रेक इवन एनालिसिस की जो आपका यूनिट है ये ब्रेक इवन कितने टाइम में हो जाएगा, कितने सालों में हो जाएगा। डेट सर्विस कवरेज रेशियो और अदर की फाइनेंशियल रेशियोज, जितनी भी हमारी डेट इक्विटी रेशियो है, एनपी रेशियो है, अदर जितनी रेशियोज हैं वो सारी की सारी इसमें हम देंगे। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो और पे बैक पीरियड। Some important tips for making a DPR is don't forget to mention subsidy amount and specify rural or urban classification. काफी बारी क्या होता है, लोग जो DPR देते हैं ना वहां पे वो सब्सिडी अमाउंट लिखना ही भूल जाते हैं और वो कंप्यूट नहीं करके देते हैं, तो वहां पे उस चीज में उनको काफी प्रॉब्लम आती है जो आपके DIC या KVIB में है, कि वो सब्सिडी खुद कैलकुलेट करने बैठते हैं और वो कभी क्या करते हैं कि उनको वो देखते नहीं कि ये तो जैसे नॉर्मल कोई चला गया, वो एक्स सर्विसमैन है लेकिन उसको नॉर्मल वाली वो क्या कहते हैं कैटेगरी में डाल देंगे, तो उस अकॉर्डिंगली वो सब्सिडी का प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन कर देंगे और उस पे कर देंगे। तो अपनी सब्सिडी का जो है ना वो अलग से बाइफिकेशन, और उसको हाईलाइट में भी रख दो आप, प्रॉपरली हाईलाइट करके हाईलाइट्स ऑफ द प्रोजेक्ट में अलग से रख दो कि सब्सिडी इतना है, इस कैटेगरी में, ये स्पेशल कैटेगरी में आता है और इसका रूरल या अर्बन है, तो ये प्रॉपरली उसका बाइफिकेशन आप पक्का दीजिए। Give proper introduction of promoters and if they have similar running businesses and give details about them. Just as I already covered कि मतलब कोई अगर existing कोई successful business वो run कर रहा है या कुछ और, मतलब उसकी turnover कितनी है, कौन से benchmarks उसने achieve किए हैं, किस टाइप के already उसने projects किए हुए हैं, तो वो काफी ज्यादा impressive रहता है जो भी evaluator होता है, तो उसको आप definitely cover कीजिए अपने DPR में। Give proper disclosures about rate at which figures are increasing in projections. ये as कंसल्टेंट या प्रैक्टिशनर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर डिस्क्लोजर दो। आप जो प्रोजेक्शंस में जिस रेट से फिगर्स को बढ़ा रहे हो, आपका स्टॉक किस रेट से बढ़ रहा है, आपका सेल्स किस रेट से बढ़ रही है, परचेजेस किस रेट से बढ़ रही है, और कहीं पे आपने वेरिएशंस किए हैं, इसके प्रॉपर डिस्क्लोजर और व्हाट आर द रीजंस फॉर टेकिंग द रेट एट विच यू हैव इंक्रीज द फिगर्स। अटैच प्रॉपर साइट प्लान्स, ड्राइंग एंड कोटेशन ऑफ मशीनरी कॉस्ट। प्रॉपर वो वैसे भी PMEGP वाले मांग भी लेते हैं, उसके प्रॉपर साइट प्लान्स आपको उसमें लगाने पड़ेंगे, और ड्राइंग्स, बड़े लोन्स हैं कुछ है वो प्रॉपर ड्राइंग्स, और कुछ केसेस में आर्किटेक्ट सर्टिफाइड भी मांगते हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन क्वांटम ऑफ हाउ द क्वांटम ऑफ प्रोजेक्ट इज। गिव प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ capacity utilization of machine and their impact on sales, purchases and other direct expenses. As I already covered, capacity utilization machine की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी मतलब जो फिगर्स होती हैं ये सेल्स परचेज की, ये ऐसे आप बिल्कुल ऑन रैंडम बेसिस मत ले लीजिए, उसको प्रॉपर उसकी वर्किंग निकालिए कि इस तरीके से मशीन किस कैपेसिटी पे यूटिलाइज हो रही है, किस कैपेसिटी पे वर्क कर रही है, and on that basis please derive the figures of sales, purchase and other direct expenses. So it is the link for some of जो भी आपकी DPRs हैं। काफी लोग पूछते हैं कि DPRs का कोई फॉर्मेट या कुछ बताइए, तो ये अभी तो मैंने फॉर्मेट तो पूरा एक एक पार्ट उसका आपको कवर कर दिया यहाँ पे और एक एक पार्ट समझा भी दिया, लेकिन आपको कुछ सैंपल DPR चाहिए ना, तो आप यहाँ पे KVIC के साइट पे जा सकते हो, पैसा बाजार और टैक्स गुरु, यहाँ पे काफी अच्छे DPRs हैं, लेकिन स्टिल KVIC वाली DPRs थोड़ी सी मतलब बेसिक टाइप होती हैं। तो आप जैसे मैंने आपको ये कंटेंट पूरा आपके साथ शेयर किया, मैं आगे CP कमेटी को भी शेयर कर दूंगा और बाकी अपना बैकग्राउंड मटेरियल रिसर्च वर्क भी, तो उससे आपको उसको यूज कीजिए, कोई अच्छी DPRs बनाइए, ये काफी बेसिक होती हैं और ये इवन वो लोग भी KVIB वाले या फिर DIC वाले भी इतना पसंद नहीं करते हैं DPRs को, क्योंकि बहुत वेरी फ्यू पेजेस एंड नॉट दैट डिटेल्ड। So this is a screenshot I have taken of PMEGP portal. So यहाँ पे हमें जब हम रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, ये PMEGP का पोर्टल रहता है, यहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, यहाँ पे अप्लाई, इस यहाँ पे क्लिक करना है।
आपका ऐसे PMEGP पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आपने आधार नंबर लिखना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, स्पॉन्सरिंग एजेंसी कौन सी आपकी, DIC है, KVIB है, कौन सी है, कौन सी स्टेट से आप हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जेंडर, सोशल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी है, तो क्वालिफिकेशन एंड अकॉर्डिंगली ये पूरा डिटेल्ड फॉर्म होता है। अब प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं PMEGP का लोन लेने के लिए? तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड 18 ईयर्स का होना चाहिए, 5 lakhs और 8th स्टैंडर्ड पास, एग्जिस्टिंग यूनिट नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्ट विद कैपिटल एक्सपेंडिचर, विदाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉट, क्योंकि सिंपल वर्किंग कैपिटल का वो नहीं देते हैं, कोई प्रोजेक्ट शुड हैव अ टर्म लोन। कॉस्ट ऑफ लैंड कैन नॉट बी कवर्ड अंडर प्रोजेक्ट कॉस्ट। All implementing agencies, KVIB, KVIC, DIC, Choir Board can process application in both rural as well as urban areas. Applicant should have a valid Aadhaar number. So accordingly, most of the things I've already covered. So on जो मैंने आपको बोला था कि KVIC के साइट पे जाके आपको सैम्पल DPRs मिल सकती है, तो वहां पे जो लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, आपको ये काफी सारे एरियाज यूनिट्स, आपको अलग अलग टाइप के यूनिट्स की सैंपल DPR मिल जाएगी, तो आपको PMEGP के पोर्टल पे, तो आप वहां पे जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनको इवेल्युएट कर सकते हैं अपने नॉलेज पर्पस के लिए। Some of the frequently asked questions about PMEGP and DPRs. So in case of local or state, like JNK, REGP, can we claim both? So हम वही, as I've already covered, कि हम दोनों नहीं claim कर सकते, either of the one we have to claim. In case of expansion of unit, can we take a top-up loan and will it be subsidized? Yes, up to 40 lakhs. I think the new limit has come. तो उसमें हम expansion कर सकते हैं और top-up loan पे भी हमें subsidy मिलती है, depending upon region to region। और इस पे top-up पे एक, जैसे अगर JK REGP में लिया होता है हमने कुछ में, तो उसमें उसी में लेना होता है, इसमें नहीं ले सकते accordingly. In case unit closes in 1 year, what will be the fate of subsidy? तो इसमें क्या होता है, 3 to 4 years का लॉक इन पीरियड होता है, तो उसके और वो आपका अकाउंट में जाता रहता है, तो आई गेस ये सब्सिडी रिवोक हो जाती है अगर ये DPR, अगर ये आपका यूनिट क्लोज हो जाता है। तो हाउ मेनी नेक्स्ट्स डू वी नीड टू एनक्लोज इन DPR? सी आइडियली 24 to 25 नेक्स्ट्स होते हैं ऑफ द थिंग्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, वो सारे आपको उसमें इंक्लूड करने हैं। Do we need to upload DPR anywhere? Yes, we need to upload DPR on KVIC portal. So I've come to new industrial policy of JNK. So if anybody has any queries on the topic we have covered so far, like PMEGP and DPRs, they can put in chat box and we can take it. Ayush, please continue. There is no question. I think one question is there. How senior members can benefit from leaves? Is there any age restrictions? What, sir? You're not audible. Ayush, my voice is clear now, I think. How senior member can benefit from these? Is there any age restrictions? So as far as I have seen on portal and other areas, there is the age restriction is 18 years. I haven't seen above a limit. I think there is no bar on upper age. Anyone can apply there. Yeah. But I think some of the schemes, like local schemes we have, there is 65 years of age. But I don't think so on portal there is as such any limit for this. As far as PMEGP scheme concerned, there is no bar on upper age limit. You can apply anytime. Any question? No more question, Ayush. You can continue on the further topics. Okay.
So the next is new industrial policy for J&K. So like I have already told, it is a major game changer for J&K. Many big corporates from all over the nation are coming to J&K for investing here and utilizing the resource-rich UT of our country. So the many benefits are available in this new industrial policy. So this is kind of a synopsis or summary I have made of all the benefits available under the new industrial policy. So there is capital investment incentive. So new unit which is undertaking expansion with more of investment, not more than 50 CR. So there is new unit, and also the units which are taking expansion, they can take subsidy of 30% of investment they are doing in plant and machinery with maximum limit of 5 CR. And zone A and zone B, these zone B areas are usually hilly areas and rural areas. So if the subsidy will be equal to 50% of investment in plant and machinery. एंड इसमें एक और चीज है कि इन केस अगर आप सर्विस सेक्टर में करते हैं, सर्विस सेक्टर में भी आपको मिलेगा. अगर आप फॉर एग्जांपल कोई आईटी पार्क या आप कुछ क्या कहते हैं होटल सेटअप करते हैं, तो आपको बिल्डिंग एंड अदर चीजों पे भी उस पे क्या कहते हैं ये जो है सब्सिडी मिलेगी. तो इट इज कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट लिंक सब्सिडी. तो नेक्स्ट वी कम टू कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन, जो हमारा टर्म लोन होता है. टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता है लगता है हमें, तो उस पे भी सब्सिडी मिलती है at the rate of 6% per annum for maximum 7 consecutive years from the date of application for registration on term loan on principal amount maximum 500 crores for investment. So to the crore of 500 crore के ऊपर के लोन पे नहीं मतलब मैक्सिमम लिमिट 500 करोड़ तक का करेंगे. तो और 6% का पर एनम का इस पे इंटरेस्ट का सबवेंशन मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल आप 10% के इंटरेस्ट पे आपने लिए है तो 6% आपको उसमें से सब्सिडाइज हो जाएगा. जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव, सो इट इज वन ऑफ द मेजर इंसेंटिव जिसपे सब लोग काफी अट्रैक्ट होके आ रहे हैं. यूनिट कैन क्लेम अमाउंट ऑफ 300% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी. जितना आपका ग्रॉस अमाउंट ऑफ जीएसटी है, आप जो जीएसटी कैश में पे कर रहे हैं प्लस इनपुट टैक्स, उसको नेक्स्ट 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन or till the validity of this scheme whichever is earlier, तो इसमें आपको अब सारा का सारा 100% ग्रॉस जीएसटी आपको वापस आ जाएगा. और लेकिन इस पे एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कि तक 300% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी. बट इट इज वन ऑफ द मेजर इंसेंटिव्स जो दिया जा रहा है. इसके लिए काफी ये कहते हैं कॉर्पोरेट्स इसमें काफी इसके कारण अट्रैक्ट होके हमारे J&K यूटी में आ रहे हैं. दूसरा हमारा आ गया वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट लिंक. तो जैसे हमने टर्म लोन का किया, सिमिलरली हमें बेनिफिट मिल रहा है वर्किंग कैपिटल में भी. वर्किंग कैपिटल में हमें कितना मिल रहा है? 5% ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द स्कीम. मैक्सिमम जो बेनिफिट है 1 CR का मिल सकता है इन 5 years. तो ये 5% भी ये सिमिलरली जैसे आप 10% पे या फिर 8% पे लेते हो, तो इस पे भी 5% की आपको सब्सिडी मिल जाती है. तो अब सर्विस सेक्टर का, सर्विस सेक्टर में भी काफी, जैसे सर्विस सेक्टर इज वन ऑफ द बूमिंग सेक्टर्स हमारी जो यूटी में. तो इन सब सर्विस सेक्टर में लिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर्स हैं. जैसे फिल्म टूरिज्म के लिए इंक्लूडिंग फिल्म सिटी, स्टूडियो सेटअप करने के लिए, रोपवेज, एंटरटेनमेंट पार्क्स, राइड्स, heritage ropeway restoration services, heritage property restoration services, healthcare services, IT and IT enabled services, maintenance and repair services, freight terminal, logistic park, warehousing, including cold store services, testing, R&D and analysis, and certification, education and skill development services. जैसे आपने मैन पावर को ट्रेनिंग या कुछ वैसा कोई सेटअप करना है फैसिलिटी, तो उसके लिए भी मिलती है. टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंक्लूडिंग हेल्थ एंड वेलनेस टूरिज्म. जैसे हॉस्पिटल्स को अभी काफी हमारे यहाँ पे इनकरेज किया जा रहा है उनको सेटअप करने के लिए.
Some frequently asked questions on new industrial policy for J&K. Whether GST link subsidy will be available on net amount, ITC amount और gross amount. तो काफी सारे लोग ना ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि जो GST लिंक्ड वो सब्सिडी है वो किस अमाउंट पे मिलेगी, वो आपको नेट अमाउंट पे मिलेगी, ग्रॉस अमाउंट पे मिलेगी. तो वो जैसे मैंने ऑलरेडी कवर किया है, वो ग्रॉस अमाउंट पे मिलेगी. कैश में जितना आईटीसी पे करें प्लस आपका जो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है उस पे. इफ आई अप्लाई नाउ व्हेन विल लैंड बी एलोकेटेड. तो इसमें क्या है, हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें लिखा है जब आप अप्लाई करते हो उसके विद इन 30 डेज आपकी जो ये एप्लीकेशन है ये प्रोसेस हो जानी चाहिए. तो अकॉर्डिंगली, और इसमें जब एलोकेशन का यूजुअली डिपेंड करता है आप कौन से विच इंडस्ट्रियल एस्टेट यू आर अप्लाइंग. जैसे कठुआ के पास एक घाटी इंडस्ट्रियल एस्टेट है, कठुआ में जो आपके पंजाब और बाकी एरियाज के पास है, तो वहां पे घाटी है, वहां पे कितने लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, उनको अलॉटमेंट आ भी गई है, दे स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, तो उनको वहां पे एलोकेट भी हो चुकी है और वो उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया. तो डिपेंड्स अपॉन विच, कुछ जैसे न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं जैसे हमारे मीन चाड़खा, सांबा और बाकी कुछ है, तो वहां पे जहां पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स ही अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. बाकी जो एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं वहां पे वो जो है प्रोसेसिंग काफी क्या कहते हैं फास्ट करी है गवर्नमेंट, उसमें काफी तेज एलोकेशंस हो रही हैं. तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ, काफी जैसे हमारा सांबा फेज 1 फेज 3 वहां पे भी एलोकेशंस हो गई हैं, इन लोगों ने इंडस्ट्री की ये जो मैन्युफैक्चर बिल्डिंग करना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है. If I don't want to apply for government land and want to buy private industrial land, will the benefits still be available? Yes, इस पे नोटिफिकेशन भी आई है और इस पे प्राइवेट इंडस्ट्रियल लैंड पे भी आपको सारे बेनिफिट्स ये सारे मिलेंगे. बस ये है कि इंडस्ट्रियल लैंड इज बिट चीप. इट इज मतलब 5 लाख रुपीज पर कनाल अप टू 4 कनाल्स एंड देयर आफ्टर उसके 6 लाख रुपए पर कनाल है. तो इस पे भी आपको डिटेल इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसमें सीपी सेक्रेटरीट के साथ, सीपी कमेटी के साथ शेयर कर दूंगा. तो उसमें भी थ्रेशोल्ड लिमिट है कि इतने, अगर 4 कनाल तक अप्लाई करते हो तो इतना रेट है और इतने, लेकिन दीज गवर्नमेंट रेट्स आर स्टिल वेरी लो एंड एट लोअर साइड एज कंपेयर टू द मार्केट रेट्स. Are incentives still available if I want to go for service sector like open a hotel or a IT hub? Yes, as I've already covered, service sector पे भी ये incentives मिल रहे हैं. There is a working capital interest of 5% and capital interest subvention of 6%. So if bank is charging me 5% or 6% interest on CC and term loan, does this mean I have to pay no interest on these loans? तो ये बहुत आता है क्वेश्चन कि अगर मेरा लोन ही 5-6% का है, हाँ, टर्म लोन और सीसी, तो क्या मुझे कुछ नहीं पे करना है? तो ऐसा नहीं है. 1% एंड 2% रिस्पेक्टिवली यू हैव टू पे लोन. उसमें मिनिमम एक कैपिंग लगाई गई है पॉलिसी में. व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दैट कैन बी टेकन? तो मैक्सिमम अमाउंट का ये पूछते हैं कि कितना ले सकते हैं. तो ये जोन ए में 5 CR और जोन बी में 7.5 CR. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जीएसटी लिंक सब्सिडी ये मैंने ऑलरेडी कवर किया था. 300% जो आपका इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी वो आप ले सकते हैं. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लिंक सब्सिडी दैट कैन बी टेकन. वर्किंग कैपिटल लिंक सब्सिडी की मैक्सिमम अमाउंट जो आप ले सकते हैं वो है 5% ओवर द पीरियड ऑफ 5 years. आर देयर पर्सन हु कैन डू टर्नकी मैन्युफैक्चरिंग फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स? यस, देयर मेनी. क्योंकि जब पहले भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी तब भी जब 90s के टाइम पे भी काफी लोग जो होते हैं वो ढूंढते हैं कि कोई जो कंसल्टेंट्स या इंजीनियर्स आए जो कि उनको टर्न की प्रोजेक्ट्स पूरे के पूरे मैन्युफैक्चर करके देते हैं. तो ऐसे भी काफी कंसल्टेंट्स हैं, आप हमारे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. दे विल हेल्प यू आउट हाउ टू फाइंड लैंड इन प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट एंड इज इट सेफ. सो प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट, देयर मेनी न्यू प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट्स दैट आर डेवलपिंग और जो काफी अच्छे उनमें एमिनिटीज हैं और वो काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं. बट इट्स सेफ्टी इज अ मेजर कंसर्न दैट यू हैव टू अगर आप बाहर से आ रहे हैं आपको प्रॉपरली पूरे रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स, उनके जितने भी ओनरशिप के कागज हैं वो प्रॉपरली आपने चेक करने हैं लेने से पहले.
और प्रॉपरली उसको, जैसे जो आपके कंसर्न इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, एक बार उनसे भी वेटिंग करवा लीजिए उसकी, whether we have to go to multiple offices for compliances or NOCs. तो यहाँ पे क्या है, इन काफी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एक सिंगल पोर्टल बनाया है इन्वेस्ट जेके, वो जब सिंगल विंडो क्लियरेंस वाला है, तो वहां पे आपको सारे एनओसीज फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल टू अदर पोर्टल जितने भी आपको हैं, सारे एक ही पोर्टल पे आपको क्या कहते हैं सारी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है, फ्रॉम अप्लाइंग टू लैंड, जहां पे आपने लैंड अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन डालनी है, से लेके आपको आगे के एनओसीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर वन पोर्टल इन्वेस्ट जेके। अब सिंगल विंडो जेके भी लिखेंगे तो आपको वो उधर आ जाएगा, तो एक पोर्टल पे आपको सारा कुछ अवेलेबल है। सो आई थिंक इस पे कोई किसी को डाउट हो, कुछ हो, तो प्लीज दे कैन रेज हैंड और दे कैन राइट इन चैट। राकेश जी, इस टॉपिक पे अगर किसी को जैसे कोई इशू होता है, कोई क्या कहते हैं क्वेरी है किसी की, तो वो लिख सकते हैं, तो आई विल टेक अप दैट क्वेरी। Yes, Ayushi, thank you for such a wonderful deliberation on the topics like PMEGP schemes and the I'll also conclude. I also conclude this. industrial policy 2013. Thank you so much. In case of any query on any topic of this webinar, members can contact me on the below mentioned email and contact number. किसी को किसी भी पॉइंट में क्वेरी आती है, कुछ आती है जो यहाँ पे आपकी सॉल्व नहीं हुई हो या आपने चैट बॉक्स में लिखी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं प्रेफरेबली, और या फिर मुझे क्या कहते हैं मैसेज कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय वेबिनार बाय कोटिंग एलेनोर रूजवेल्ट's quote, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." So I hope all of our members rise and shine and work hard and venture into uncharted avenues and excel there. So I would again like to thank Adukya sir and the members of CPE committee for giving me this opportunity. And I would like to conclude this session of the seminar. Over to moderator Rakesh ji for the further deliberation on this webinar. Thank you so much. Thank you, Ayush Sahani ji, for your such a wonderful deliberation on the topic PMEGP schemes and J&K Industrial Policy 2021-2030, and making us aware about the various incentives available in the schemes. Thanks a lot, Ayush ji. Now it's my pleasure to introduce our next speaker for the session, and before introducing him, I would like to apprise you all about the 21st World Congress of Accountants, which is going to be held for the first time in India from 18th November 2022 to 21st of November 2022. To know more about this, I would like to request technical team to play short information video. Please see this and register yourself for the Geographically, the 7th largest country in the world, one of the oldest civilization, world's 6th largest economy, a global hub for innovation with one of the largest startup ecosystem. India, city of Mumbai on the western coast of Arabian Sea, among the most advanced and modern metropolises in the world, and the financial capital of India, gears up to host the most prestigious accountancy event of the world, 21st World Congress of Accountants from 18th to 21st November 2022, an event held every 4 years. The Olympic of Accountancy profession. India hosts the event for the first time in 118 years since the WCOA came into being in 1904. Around 10,000 delegates expected to join virtually. More than 6,000 delegates from over 135 countries would congregate to exchange views at the world's most advanced
Geo World Convention Center. The theme, Building Trust, Enabling Sustainability, will inspire the future of accountancy profession to create sustainable economies for the future. The ICAI is honored to be the host for this mega event, which will bring together the world's largest conglomeration of professional accountants, regulators, leaders, and visionaries to advance the cause of the global accountancy profession. Now, with the ease of travel restrictions across the world and the situation returning to normal, we are working towards creating a never before and a unique experience for all our delegates. The year 2022 marks the 75th year of India's independence, and the Government of India is celebrating the year in a big way to showcase the glorious history of India. World Congress of Accountants 2022 would also be celebrated as a mega event to showcase the important role that the accountancy profession has been playing in the economic and social development of the country. A never before witnessed unique experience of learning future trends, emerging avenues, enhancing skill sets, networking, and to explore the incredible India awaits you. We at ICAI are pleased to host you here in Mumbai, the financial capital of India, for the 21st World Congress of Accountants with the theme Building Trust, Enabling Sustainability from November 18 to 21, 2022, and give you a professionally enriching and personally rejuvenating experience. We are hopeful that the conference shall be stimulating and productive, and your stay in India will be a memorable experience. Once again, we invite you for this enthralling convergence in India, the land of multicultural, historical, and spiritual inheritance since centuries. Insights from the stalwarts of the profession, international and national standard setters, regulators, and trendsetters will constitute the panel of speakers at WCOA 2022. Let your dream get bigger. Come, be a part of this mega celebration. For registration and sponsorship opportunities, contact. Organized by Institute of Chartered Accountants of India under the aegis of IFAC. Okay. I again request you all to please register yourself for the same. Now, it's my pleasure to introduce our next speaker for the second session, Mr. Atul Puriji. He has done MBA Marketing from Indira Gandhi National Open University in 2002. He has done BE from University of Mumbai in 1996. He has also done certificate in competitive marketing from IIM Bangalore in Feb 2010. He is Leverage Group public speaker and social entrepreneur. He is an author of 2 books on business, opportunities and innovations. I request Mr. Atul Puriji for his deliberation on the topic, how to design super successful practice. Welcome, sir. So thank you, CA Rakesh ji. So it was really, even I did not know that I've done so much in life. All right. So after such an engaging conversation by CA Ayush Sawhney, I really have big shoes to fit into. All right. My question to all of you is, do you really want to have a super successful practice? If yes, please write in the chat box, yes. And let us please hear how many of you are saying yes. Yes, we all ready, Atul sir. All right. So I think this would be something which is critical for everybody. Wherever we are, we may have been fresh chartered accountants, or we may have been fellows, or if we have been there for decades, we still have the next level to go. I thought it would be an interesting conversation to look at how is it that you can take the next level. All right, so are we ready? Yes, no, thank you.
So I'm not able to see your responses, but please give the response in chat box. Meanwhile, I'll start sharing a presentation. So I request attention from you for next maybe around 40-45 minutes. And then we'll open for deliberation maybe for another 10-15 minutes. All right. So this was the message that you people had got, and after which you registered for this evening deliberation today. So before I move further, let me just share with you a little bit about myself on top of what Saini Saab has already shared. This is how I look like. These are some of the companies with whom I've worked in the past. And eGrowth is the platform that I run to empower and enable small businesses. This is how we've grown at eGrowth. And then during the journey, I published something called as the leverage model. I'll be talking a little bit more about it today. And one of the books that I published is Govt, Mastering Business Success. And yes, my name is Atul Puri. What are we going to cover today? The two choices that you have. 3 stages of practice by design, 13 stages, and 5 orbits of your practice. And just before I move forward, I'd like to ask you, do you think you are a businessman, a business person? So somebody from the tech side, if you can tell me how many people think that they are business owners. I know we are more than 300 people on the group right now. Any answers? Hello? Okay, so while we get that answer, let me share what are the 2 choices that you have. The first choice is practice by chance. You cleared your CA, you became an apprentice, and then you had a choice to get employed in some company, or you had a choice to start your own practice. Or maybe you did not get a job, so you thought, let me start practicing. So this is broadly what a practice by chances looks like. It has a beginning. It could also be an inheritance. Maybe you are a 2nd generation or a 3rd generation CA. Second is because of the experience that you got. Next is you see that the new trend, there is a lot which is happening in the CA space. Or maybe you get a pink slip from the company where you were working. That is how you end up starting your own practice. Next stage comes growth. This is where you form your own company. It can be a proprietorship company or a private limited company or whichever forms. You know it much better than what I do. And then you start engaging with customers, clients. And then your job is to continue to sell. Sell in the sense, keep on giving the services. And then comes the 3rd stage, which everybody dreads. This is called a struggle. Customers stop paying, so receivables start mounting. You don't get enough apprentices, assistants to deliver all the work that you get in. Because of so much competition, the margins keep on going low. This is typical practice by chance. And then there is another kind of a practice. I'll talk about it in a moment. So practice by chance, it's always bleeding, always struggle.
little or no growth, just surviving quarter after quarter, year after year, driven by jugaad, and always operating in the urgent space. Few customers, few processes, and survival. This is what defines a practice by chance. And then there is another kind of a practice, which is practice by design. This is where you start with a design. What I mean by design is you start with the future in mind. You start looking at how do you want to shape your practice. You're operating like a startup, putting small things together, but consistently moving together, moving in a certain direction. The second stage becomes a development stage. This is where you bring in technology, you bring in subject matter experts, and then you continue to grow. This stage is driven by present. How do you serve your existing customers? How do you engage with your existing clients? How do you go up the value chain? And then comes the third stage, which is diversify. This is where you start to monetize your practice. You become, your business becomes a mature business. You start replicating it in different cities, different states. And then you look to divest it. As you help other businesses to get merged, to get acquired, to get sold, you look at getting that done for your own business. This is what practice by design looks like. Practice by design is highly profitable. There is consistent growth and there is enough buffer for bad times. And you're operating in the leverage quadrant. There are multiple inputs, parallel processes, and profitable outcomes. Sorry. There are 13 elements of practice by design. These 13 elements, as I shared earlier, are divided into 3 stages: design, develop, and diversify. Design has 4 elements to it: future, lifeline, opportunity, and gain. The acronym is GOLF. Develop, the acronym is CORE. It's about sales, collaboration, building an organization, consistently growing revenue, and excellence in practice, in technology, everything. And diversify, the acronym is MILK. Monetize, integrate, create a legacy, and build a knowledge base. So these are the 13 elements of practice by design. As you move from one stage to the next, you start looking at your conversations, and your priorities keep on changing. And these are broadly the 13 priorities that we would have. Next, I am talking about 5 orbits of your practice. So as your practice keeps on maturing, you start looking at different kind of engagements. I call this as 5 orbits of sales. The first piece is sales, which essentially means your client needs an X service. You provide that service, you get paid for it. The second one is referrals. You serve your client well. Your client
refer somebody else to you. This is how your practice keeps on growing. The third one is networking, wherein you keep on building your sphere of knowledge or your network. You participate in different events, you go and meet up with different people, and that is how you keep on nurturing a larger network. Maybe you keep on sharing knowledge such that people get in touch with you. This is how you keep on growing your network. The fourth element is leverage. This is where you leverage different resources that you have, your knowledge, the contacts that you have, the resources that you have, the money that you have, or maybe other professionals that you have in your network. You leverage all of them to grow the business. And the fifth element is the most interesting one. This is where you start thinking about contributing. This is when you start thinking about giving back to the community. That is the most satisfying one. So let me share this in a more graphic manner. The first piece, sales, is more like sales of tea. You want to have tea, you go to a tea seller, the tea seller gives you tea, you make the payment and you're done with it. That's a transaction. Somebody wants to fill his IT return, we just come out of that. You file the IT return for that person pays you and you're done with it. This is a transaction kind of a business. Next level is you're acting like a hunter, wherein you go to a certain business, give them a pitch, tell them how you can help, and like a sharp shooter, just deliver and get paid for it. The third level is more like a farmer, wherein you are nurturing the relationships. This is like networking. You're nurturing the relationship, you're allowing it to blossom, and then your business comes to you naturally. The next one is even more interesting. This is Weaver. So the text that you see in the brackets, that is interesting. So for a tea seller, it is just a transaction. So that is what T stands for. A hunter has a skill and transaction. A farmer has knowledge. What would his client need at what time? How he can add value to his client. And he continuously keeps on building on his own skills and then continues to do the transactions. The Weaver adds one more level to it, which is a process. So there is a transaction, there are skills, there is knowledge, and on top of it, there is a process. If you would see, the product of the Weaver is most expensive, because there is a lot of value around the process. Think of your own practice. If you start acting like a Weaver and you have a process and your practice starts running independent of you and it is highly scalable, you would have a lot of time to do other things. You would have a lot of time to establish other businesses. I want you to start looking from here to build your business.
Sales, referrals, networking, leverage, contribution. And what are the kind of engagements which are there? Sales is done by a salesman. It primarily comes from the thinking of existence, survival. Hunter again operates from survival. Farmer operates from a sense of belonging. Weaver again comes from a sense of belonging. Contribution comes from give back. So if you start operating from contribution, you will not have to worry about existence. That will be taken care of by default. So sales, there's a very old, I think 1960s it was proposed, called spin methodology, wherein you look at the situation of the client, identify the problem, see what is the impact, and then give a solution based on the need or the payoff, and you price it accordingly. Reference is SWAT, sell what is available today, because there is somebody who's given a reference to you. You end up selling them, already have their need identified. So you give that service to them. Networking is about asking, creating awareness about yourself, and then doing a sale, and then keeping the customer with you for life. This is networking all about. Leverage is about golf. Create a future. Create the product that you want to sell. Your service can be a product. And then look at the opportunity. What is the market size? And then create a game plan around it. This is how you would leverage your skills and your network and everything. And contribution is all about giving. Gratitude, inspiration, creating value, and empathizing with your entire ecosystem. If you come from contribution, rest everything will be taken care of. Sorry. Next is 5 orbits from the perspective of customer relations. It starts with a prospect. So 8 billion people on this platform, on this globe, are your prospects. Out of them, a small set are your customers or clients. And within them, who keep on coming back to you, they are your clients. And within them, there are some who recommend you. They are your advocates. And within them, you can swear by them and they can swear by you. They are your partners. So to build a super successful practice, you need to nurture every prospect such that they become your partner. Once a prospect does business with you, he becomes your customer. When the customer has faith in you and he keeps on coming back to you, he becomes your client. And when your client starts giving you referrals, when your client has that level of faith that he can put his neck on the block, he becomes your advocate. And then the next level is partnership. Have you looked at your
business or practice like this? If yes, write in the chat box 5 orbits. Okay. Let's move on. So how the customer moves on is prospect, customer, client, advocate, partner. A prospect is in a state of doubt. He is not very sure whether he should do business with you or not, whether you will do an appropriate work or not. A customer is new. He is doing a trial with you. A client is also new, but he has belief in you. Advocate is an old customer and he has trust with you. Partner is also old. You have established a bond with your partner. If this is something which is exciting, just write AHA in the chat box. And when you're writing this in the chat box, you are doing this for yourself, so that you're able to remember this. So here's, I invite you to make the great shift. The shift from speaking to listening, from expenditure to investment, from my way or the highway to customer's way. All this for a single reason, that it is your customer who pays your bills. So the more you align your activities with your customer, the more your customer feels validated, more value will you get from your customers. All right. Speaking to listening. So listen to your customer. Listening just does not mean hearing your customer. Listening means understand what is the underlying message the customer wants to convey to you. Expenditure to investment. Invest in your customer. Go beyond the scope of work. So like today, CA Ayush, he shared about the industrial policy in Jammu and Kashmir, about PMEGP. Now, this is not relevant for many of us, but for some of us, it is relevant and we did not have that information. So CA Ayush, he invested in time, his time and energy in his fellow colleagues. So similarly, if you share something valuable with your customers, with your partners, that will come back to you. It may come back as referrals, it may come back as new business, it may come back as a simple Diwali sweet gift also, but it will come back. Does that make sense? If you think it makes sense, write in the chat box, I will invest in my customer. I will invest in my customer. Write in the chat box. And the third piece, my way to customer's way. Please appreciate your existence is because your customer is in business. If your customer is not in business, you will be out of business. So if you want your customers to be partners with you, you have to become a partner with your customer.
So co-create with your customer. So thank you, Ayush, for writing, I will invest in my customers. So in case you have a question, what does co-create mean? Co-create means you act like a consultant to your customer. Your customer may be a manufacturer. Okay. He understands how to manufacture products. He understands how to sell those products. He does not understand how to make more money out of the money that he has. That is where you can help him. If he has more money, he will give you more money. All right. And if co-create is a term that you've heard for the first time, please write in the chat box, co-create. So I'll repeat this once again. Shift from speaking to listening. Start listening to your customer. Shift from expenditure to investment. Stop looking at things as if they are an expense account. Start relating to them as an investment in your customer. Sorry. My way to customer's way. If your customer succeeds, if your customer grows, you grow. It's not the other way around. If you grow and your customer does not grow, that means you are going to fall. So co-create with your customer. When you see that there is something which is out of place, highlight it to your customer. Tell them that this is how they should take corrective actions. Maybe there is something happening in the forex space. Tell them that they should hedge their funds. Maybe there is something happening in the export space, in commodities. Tell them to plan accordingly. Maybe there is something happening in a certain country and your customer is exporting to that country or importing from that country. Ask him to start looking at alternate channels. This is beyond your scope of work. But this is an additional value which you are providing to your customer. And the moment your customer sees this, he will take additional care of you. Do you think these kind of small shifts in how you conduct your practice will bring in more revenue to your practice? Write it on your notebook. Okay, you need not tell me this. Let's move on. So putting things together. The only reason for your business or for your practice is your customer. Two choices you have is practice by chance or practice by design. So if you continue to run your practice by chance, you will continue to get the results that you have been getting so far. If you switch over to practice by design, there is a possibility that you'll experience great success in your practice. Maybe your next generation will be able to inherit your practice. But if it is practice by chance, there is zero possibility. Five orbits of your practice. We discussed this. If you think that this is something valuable, write valuable on your notebook. 3 stages of practice by design. We discussed this. These are design, develop, and diversify.
I'm very sure you would have not thought about diversifying your own practice. You may be guiding your customers and clients to diversify, to hedge, to expand. But I'm very sure you would not have been thinking about it for yourself. 13 elements of practice by design. What next? Is the leverage model blueprint. This is a program that I run. I'll take you through various elements that we cover in this. And then we'll take some questions. So let me start with design brings workability and it also brings a state change. Okay. The purpose of design is to bring workability. So are you committed for a state change? If yes, write in the chat box, yes. So I run this program called the Leverage Model Blueprint, which helps you outperform even after the pandemic. It helps you re-examine, retool, reboot, and restart your business. There are 3 key elements in it. The first one is the new world order. The business world has been consistently changing. We deliberate on what are some of the elements which have been changing. We talk about the leverage paradigm. And the third element is what is in it for you. The new world order, we're talking about the changing world dynamics. How is the business shaping up in the 21st century? What are the futuristic business design principles? In leverage paradigm, we discuss the design perspective to the business, inherent nature of the business, some business fundamentals, an introduction to the leverage model. And what's in it for me? It covers future, which is the soul of your business. How do you discover the soul of your business or your practice? The product, which is the lifeline of your business. The market, the opportunity, which is in front of you. The game plan, which is putting the blocks together. To add to this, we also have some bonus topics, which is the economics angle to the leverage model. Having a look at the 4th industrial revolution. What is it bringing forward? The India story. A microsurgery of your product offering. Theory of constraints, abundance mindset. Business is as much a game of the mindset as it is about the knowledge and skills that you have. All right. So the new world order, leverage paradigm, what's in it for me, and bonus topics. How do you benefit? One is you stop loss. So identify the gaps in your business. Discover areas which are not working well. Identify systems which have failed, structures which have failed. And also you look at the growth factors which will help you grow your business. So funnel design, funnel nurturing, market discovery, systems and structures, team dynamics, how to get work done from your team, customer engagement, influencer engagement, and also mentors. So here are some of the mentors who we have on board, and we can get you connected to them.
Right? So this is all what is covered in the blueprint. Having said that, I would like to give a gift to all of you. As you're aware, I've published 2 books. So the first book that is available for you, Golf Mastering Business Success. It has 19 chapters, 10 chapters on the context of the leverage model, 4 chapters of which define the leverage model. And there are 3 case studies, how 3 business owners, they implemented the leverage model and what are the kind of results they caused. So if you want to have a soft copy of this book, please write to me at atul@egrowth.org. I repeat, atul@egrowth.org. And now I'm open for questions. So you can please write the questions in the chat box and I'll be glad to answer them. So do you have any questions? Hello. Hello. Yes. Thank you, Atulji, for such a wonderful deliberation. I first time was this kind of a webinar on such a wonderful topic, how to enhance our practices. And you deliver such a wonderful deliberation today. I really myself help out a lot from how to gain your customer, how to engage themselves, how to diversify your practice, and a lot of areas you have covered. I will again want to see you on such a wonderful topic. Thank you a lot, Atul sir. Thank you, Rakesh. In fact, I would like to say thanks to Dr. Dukia, who encouraged me to come and spend such time with you all. All right. Thank you, Atul sir. We can close it now. One person from Paramjeet Ji from Kanpur had asked whether subsidy will be capital or revenue. See, both term loan and CC benefit of PMEGP can be taken in both the cases. However, term loan should be there if you want to take benefit of PMEGP scheme. The other Meet Jagani Ji from Rajkot, he had asked what is the current limit of project in terms of what is the cost of project in terms of money for PMEGP. See, the cost of project is 10 lakh rupees in case of service sector, the upper limit, and 25 lakh rupees in case of manufacturing sector. I think so. I've covered all the questions. If any other question, you can take my number from CP committee. Looking forward to much more deliberation and much more webinars and knowledge sharing. And thank you so much, Atulji. It was so insightful to learn from you. Looking forward to much more webinars from you on our institute's platforms. Over to Rakesh Ji, who has been handling and coordinating very well. Over to you, Rakesh Ji. Thank you, Ayush. Thank you. And you have wonderfully answered all the questions. And such a wonderful session we have today. And let us conclude today's sessions. And we will meet soon on some other topics and on also
some explanations and some new areas of industrial policies. Thank you, Ayush. Okay.